Okay, so unit 12.3, continuation of capital budgeting. Now in this unit we will solely discuss payback period. Okay, now you have already learned and I have already explained you the what is capital budgeting and all. Now see, now you allocate your capital on the basis of few important criteria. There can be many criteria, of course. You will be careful. It depends from the culture to culture, country to country. पाकिस्तान में हम अपनी इन्वेस्टमेंट करने के डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, बहुत ही ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है, देखना पड़ता है. मार्केट में गुडविल बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती है, बिकॉज देर कैन बी सर्टेन केसेस ऑफ फ्रॉड एंड ऑल. ठीक है, अगर आप किसी डेवलप कंट्री की बात करते हैं वहाँ पे आपको थोड़ा कम देखना पड़ता है. तो ऑफकोर्स देर आर मैनी क्राइटेरियाज, बट एकेडमिक परस्पेक्टिव से जो आपकी किताब में है, देर आर फ्यू क्राइटेरियाज जिनको हम डिस्कस करेंगे, एंड वन ऑफ दैट इज द पे बैक पीरियड. नाउ व्हाट इज पे बैक पीरियड? पे बैक पीरियड इज द अमाउंट ऑफ टाइम in which your initial investment is recovered. ठीक है, अमाउंट ऑफ टाइम इन विच योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड. फॉर एग्जांपल, आपने कोई 6 साल का प्रोजेक्ट लिया है, ठीक है, और उसमें आप ये देख रहे हैं कि एटलीस्ट आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 3 साल में ही रिकवर हो जा रही है. सो यू आर वेरी हैप्पी कि चलो 6 साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल तक तो आई विल गेट ऑल व्हाट आई हैव इन्वेस्टेड, और उसके बाद वट एवर आई एम गेटिंग इज सोनली प्रॉफिट. ठीक है, तो आप पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन कैसे करते हैं आपको वो भी बता दी हूँ. तो पे बैक पीरियड इज एक्चुअली the time when your initial investment is recovered. It can be 2 years, it can be like 2 year 3 months, it can be like 6 years 7 months, whatever. It can be in months, it can be solely in years. डेसिमल में आपका जवाब आ सकता है. ठीक है, सो नो बिग इशू. अच्छा, अब इसमें एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, अगर आप देखिए ये आपके सवाल में मेंशन होगा. बेसिकली एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इट विल बी मेंशन इन द क्वेश्चन, बट अगर हम रियल लाइफ की बात करें, रियल सिनेरियो की बात करें, तो इट इज़ डिसाइडेड बाय द टॉप मैनेजमेंट. ठीक है, टॉप मैनेजमेंट बता देती है कि भाई यहाँ तक अगर पे बैक है तो देन यू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, अदरवाइज यू रिजेक्ट द प्रोजेक्ट. ठीक है, for example, I say that I will accept the for example, I'm investing in a project which is for 10 years. 10 years के project में मैं invest कर रही हूँ, अच्छी खासी heavy investment है. Now I am the head, as a head of the management, as a top management, I have decided that I will only invest in the project if my payback period is within 4 years or maximum 4 years. That is it. If it is going beyond 4 years, I will reject the project. Okay, so this thing will be mentioned in the question. Real life में भी top management इस चीज को decide कर देता है. You as a manager, आपका काम क्या होता है कि आप एक calculation कर दें और फिर आप अपनी एक report बना दें कि acceptance और rejection. Okay, so now see the example. This is a simple payback period. Okay, now see, this is an example in which there is a project that is of 3 years. In the year zero, there is an investment of $10,000. Then in the year one, you are receiving $1,000. Then in the year two, you are receiving $6,000, and in the year three, you are receiving $8,000. Okay, so this look at the first look at the question. Don't go towards the solution. I will explain the solution first. Look at the question. So this is your cash flow. Okay, minus 10,000. It means this is your investment. This is year zero when you are starting the project. You are investing in the project, and the project is of altogether 3 years. In the first year, you are receiving 1,000. In the second year, you are receiving 6,000, and in the third year, you are receiving 8,000. Now the question is when the break even is occurring. Okay, now in order to find the break even, you have to find out the cumulative cash flows. ठीक है, आप cumulative cash flow मालूम करते हैं, and cumulative cash flow के लिए let me open Excel and I will solve in front of you. Okay, so I have opened Excel and I will solve in front of you. Don't worry. Okay, so we are talking about, let me just do little settings. So we are talking about project A. Okay, that is for
3 years. So here I will write down the years, here I will write down cash flows, and here I will write down cumulative cash flow. You all know what do you mean by the word cumulative. आपने stats का course pass किया हुआ है, ठीक है. Cumulative means when you add in the previous quantity. Okay, it's accumulation kind of a thing. 0, 1, 2, and 3. The project is for 3 years. In the first year, there is a investment of 10,000. Okay, I'm making a bracket so that I can get a negative sign. Okay. Okay, and then you are getting 1,000. And then what you're getting? Somebody remember 1,000, and then 6,000, and then 8,000. Then you are getting, here you are getting 6,000, and then you are getting 8,000. Okay, now see, leave this blank and you will start calculating cumulative cash flows from year 1. So this comes 1,000. Okay, this comes 1,000 plus 6,000 is 7,000. Okay, and then 7,000 and 8,000. 7,000 and 8,000 makes 15,000. Now the 15,000 is exceeding 10,000. Okay, so when the cumulative cash flow will exceed the initial investment, at that place you will stop. Okay, at that place you will stop, and now you will find out your payback years, and then you will find out your payback. See, what is your payback? Your payback is actually 2 years. तो आपको पता चल गया, because 2 years तक you are getting 7,000. Now how much is left? 10,000 and 7,000. What is the difference? 3,000. ठीक है, 3,000. And this 3,000, from where you will recover? You will recover from this 8,000. So you're getting 0.375. So altogether, so this is your final answer for the payback. So 2.37 years. So this is your final answer. I hope you must have understood the calculation. I'm doing a quick recap. This is your initial investment, 10,000, and these are your upcoming cash flows. You will calculate the cumulative cash flow and you will start from year 1. Never start from year 0. Okay, on the year 1 you got some amount, then you added it into this and you get here. Okay, 1,000 will come as it is. 1,000 plus 6,000 is 7,000, and then 7,000 plus 8,000 is 15,000. But you will stop here. Okay, you will stop here because this 15,000 is exceeding 10,000. Okay, so now you will calculate your payback year. Your payback year is still year 2, and now some portion of year 3. And what portion of year 3? 0.375 portion. Now finally add these two and you will get your final answer. This is the whole calculation of payback period, payback year. ठीक है, हाई हो पेबैक पीरियड का वर्ड ज़्यादा सही रहता है बिकॉज एक टाइम फ्रेम बताता है पूरा. years भी सही है. So 2.375. Okay, I want you all to do this question in your register. Okay, stop the video and do it. जब आप ready हो. So you can see here we also have 2.375. Okay, now this is project B. Okay, and same way, same calculation, try it, and if you have any problem you can discuss with me in the Zoom class. Okay, it has a 10,000, then 7,000, 5,000 and 2,000, and then you can see इसका कम्युलेटिव 10,000 है, तो हाँ इसका तो 1 पॉइंट समथिंग में ही आ जाएगा. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह है, बहुत सिंपल है. डू इट. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ पेबैक पीरियड. ठीक है, पेबैक पीरियड के देयर आर एडवांटेजेस एंड देयर आर डिसएडवांटेजेस. देखिए, ये तो हायर मैनेजमेंट फैसला करेगी कि डू दे वांट टू सेलेक्ट द प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ पेबैक पीरियड और दे don't want to. They want to choose some another criteria. It depends on them. But we are here to discuss few advantages and disadvantages of payback period. The advantages are the calculation is very simple, easy to understand, and it usually focus on the cash flows.
Okay, and the disadvantages are that payback period के बाद वाले जो कैश फ्लोज होते हैं उनको हम कुछ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। अच्छा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इसमें कोई हम अफेक्ट नहीं लेते, हम इसको कोई बैकवर्ड डिस्काउंट नहीं करते। रिस्क की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, रिस्क से रिलेटेड हम इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करते। एक आर्बिट्रेरी सा पे बैक पीरियड हम बता देते हैं, ठीक है, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन की तरफ हम इस पे कोई भी बात नहीं करते, सिंपली दैट व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू रिकवर, इसके अलावा पे बैक पीरियड आपको कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं देता। ओके, this is all with the payback period. If you have any question, you can ask me in the Zoom class. Thank you.